When and we are here only today to talk about energy. There's only energy around. To understand what is energy, what I'm talking, words are giving direction to energy. Words are giving direction to energy. So whatever you speak, you have to be 100% aware. Whatever you speak, you have to be 100% aware, because words are giving direction to the energy, and energy will start flowing according to the words you have. That is why it's very essential that you first have lot of awareness within. And to create awareness within, we come to the mind. So what happens? The mind has to be very stable. Gentlemen, I would just request you to listen, because I don't mind if you write, you can continue to write. But if you will understand, you will be with the flow, rather than your energy is going on the paper. I also was like you. I'm telling you, I was exactly like you. I would write each and every word the speaker would write. But then I understood that if I understand, it will sink inside, and then what I will say will be a different matter altogether. So whenever I come for a lecture, I never prepare for a lecture. We started with gratitude, then we started with energy. Then we are coming to the mind. We have a mind within us which has a bundle of thoughts. Now, the topic today is the magic of dowsing. For what are we going to use the pendulum? To give us direction in some unknown areas where we are mentally puzzled. In the old age, before eras together, the pendulum was being used to find the direction or some hidden metals in the water. But this pendulum can give direction, can give us direction of what to do in unknown areas. So first is that you have to be introduced to the energy. You must know all about energy. Everything about energy, when you start knowing, and when you develop an intimate relationship with the energy, then you can do something about it. Energy cannot be seen, cannot be produced, cannot be destroyed. It is only, pardon? Very good. And what else? Please come. Please. I am very happy. Because it will be an interrogative session whereby we will be able to go fast. Tell everything about energy, whatever you can speak. It's a law of conservation of energy. Energy neither be created nor be destroyed. But one form of energy can be converted into another form. What else? Newton's law. जो भी एनर्जी का मालूम है सब बताओ. Really? Likewise, actually, money also energy. When we actually look at the money, we actually really feel enthusiastic. Because of that, money itself a energy. And money, actually, if we look at money, we get energy. Because of money, we can buy so many things. It means energy will neither be created nor be destroyed. So one form of energy transformed into another form. We can buy through the money lot of things in the world. That means money converted into things. That I meant to say. Okay, sit. Money is the energy. Thank you. Okay. Anyone else want to say? Please. Feel free. Anything about energy, please. Because first, come. The energy that we are talking is not electrical. This is from God. What we are talking is the energy from God. Not created by any things or person. It is through God coming to the whole universe.
and we live on that energy. If that energy is there, we survive, otherwise all perish. This energy has a consciousness. Is it correct? Is it correct? Everything is correct. Don't ask correct or not correct. I am not the master. You are the master. Please. Okay, now this Don't energy feel what we- inferior. Everything is same. The energy of what we are talking is a conscious energy. If we touch or sense it, it will not harm it. If we touch electrical energy, it will harm it. So loving energy it is from God. And it helps us in every way. Even the disease are healed by the energy. That's all. Right. Very good. Anyone else? हा प्लॅटफॉर्म पण तुमचाच आहे. तुमच्यामुळे मी आहे इथे. वर बोलायचं काय म्हणजे हे माणसाच्या आवाजाच्या बाहेरची गोष्ट आहे. पूर्ण म्हणजे विश्वामध्ये एनर्जीच आहे. तुमच्यामध्ये माझ्यामध्ये सर्वांमध्ये या विश्वामध्ये चराचरामध्ये एनर्जीच आहे. आणि फक्त तिला आपल्याला साक्षात होणं महत्वाचं आहे. शाब्दिक उहापोह करणं महत्वाचं नाहीये. आणि म्हणजे तत्व किंवा फिलॉसॉफी मांडण्याचा अर्थ नाहीये. Beautiful. ते अनुभव करण्यात आणि तिच्यामध्ये राहण्यात आणि तिला दिशा देण्यामध्ये तिचा वापर करण्यामध्ये आपण जितकी आपण तरबेज होऊ, हुशार होऊ, असं त्या दृष्टिकोनातून मला वाटतं की आपण योग्य एनर्जीला समजू असं मला वाटतं. Right. Concerned. There are 4 things by which energy flow can be straight. First is आप खुद आपके साथ बात करते हैं, हाँ या ना. सेल्फ टॉक करते हैं, हाँ या ना. यस. तो उसके अंदर आपका संबंध खुद के साथ है, हाँ या ना. जब आपका संबंध खुद के साथ है तो 4 चीजें आती हैं कि खुद को हम फॉरगिव करें, हमेशा अपने आप को प्रेम करें, अपने आप को माफ करें. पहले हम अपने आप को प्रेम नहीं करते हैं. हम अपने आप को पहले हमें अपने आप को खुश रखना है. फर्स्ट अपने आप को खुश रखना है. अभी ये इसका संबंध डाउजिंग के साथ कैसा है आप पूछेंगे. डाउजिंग को इसके साथ क्या लेवा देवा. वाई इसलिए है कि जब आप मन से खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तब आपकी रीडिंग सही आएगी. और जब आपकी रीडिंग सही आएगी तो आपको उसमें और मजा आएगा करने में अंदर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर पल खुश रहें. दैट इज फर्स्ट. और हर पल खुश रहने के अंदर यू हैव टू बी वन विथ योर सेल्फ. टू बी वन विथ योर सेल्फ यू हैव टू बी हैप्पी. फॉर दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट यू विल हैव टू लव योर सेल्फ. You will have to forgive yourself. Love, forgive, accept. Love, forgive, accept. और एक बोलो आप. You have been there. And believe in yourself. Love, forgive, accept and believe. Love, forgive, accept and believe. अभी ऐसा ये क्यों जरूरी है. अगर हम दूसरा देखते हैं तो एनर्जी को हम एनर्जी एक है, उसमें 2 नहीं होता. देयर इज ओनली वननेस एंड सेमनेस इन एनर्जी लेवल. 2 होता ही नहीं. भगवान बाहर नहीं है, आपके अंदर है. बट वो जैसे गुलाब की पंखड़ी मेन है और उसके ऊपर सब कवर आ गया है, वो बीज अंदर ही है. नाभि से आप धड़ाधड़ बोलने लगोगे, आपको भी सब मालूम है. बट सब आपको उसका इच्छा इतना पैदा नहीं हुआ है, इसके लिए यू आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस इट. इट्स ऑल इनसाइड यू. सो व्हाई दिस 4 थिंग्स आई सेड. एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड. एंड वननेस, सेमनेस. देन द 4 थिंग्स वी सेड. लव, ब्लेस, एक्सेप्ट, फॉरगिव. In any form or the other, we have to rise above blaming other people. Blame में हम दूसरा देखते हैं तो एनर्जी लेवल डिस्टर्ब हो जाती है, फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है. एनर्जी को बैलेंस रखने के लिए हमें पेंडुलम या डाउजिंग रास्ता बताएगा.
बैलेंस कैसे रखते हैं और पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसमें। बट पहले जरूरी है कि हम अपने आप को शांत रखें, और अपने आप को शांत रखने के लिए वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज रिक्वायर्ड। दैट इज व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड